Children, here in this video we are going to study about the importance of biodiversity. Means what is the importance of biodiversity? Along with this point or this question can be asked in the form of reasons for concern. Means what is the importance and what are the reasons for concern? Let's see the reasons. There are three reasons: ecological reasons, aesthetic reasons, and economical reasons. Let's start with ecological importance of biodiversity. Now children, before beginning with the ecological importance of biodiversity, let me explain you what is ecology. Ecology is the branch of science which deals with the study of the interaction between the living organisms along with the non-living environment. Now, I would like to explain you this with the help of a simple example. Producers, green plants. These green plants are dependent on sunlight, water, and they are present in the soil, so definitely soil also, to perform the process of photosynthesis. Now children, here you can see that the living organism, that is the producers or the green plants, are dependent on non-living factors, air, water, for survival. Now herbivores, that is the consumer, herbivores are dependent on green plants. So this is an interaction between, or we can say this is a dependency of herbivores on the producers, interaction between the herbivores and the producers. Now carnivores are dependent on herbivores. So here we can see the interaction between the living organisms, a dependency on one another. Along with that, we need air, we need water for the survival. So we are dependent on non-living things also. So this is how the interaction is there between the living organisms and the non-living things. This is what we study in ecology, and this is what ecology is. Now let's see about the ecological importance of biodiversity. Different plants, animals and microbes perform different functions which are essential for the smooth working of ecosystem. Now let's see the role of biodiversity. The first role is production. Green plants are the primary producers of food on the earth, and they are responsible for the food chain. Children, here we are going to see the food chain. It's an example, it's a simple food chain. Food chain means interdependence of one organisms over the other. So a food chain always starts with the producer or the green plants. Green plants prepare their food in the presence of sunlight, water and chlorophyll. So here we can see that green plants are dependent on the non-living factors also. And grasshopper, which is a primary consumer in this food chain, is dependent on green plants. Then frog, which is a secondary consumer in this chain, is dependent on grasshopper. Snake, a tertiary consumer here, is dependent on frog, and hawk, a final consumer, is dependent on tertiary consumer. If when a hawk dies, then decomposers are there which decomposes hawk and the nutrients get mixed up in the soil. Now what is decomposition? Decomposition means breaking down of complex molecules into simpler ones which can be easily taken up, or we can say which gets easily mixed up with the soil and enhance the nutrients of the soil. So this was about food chain, in which we have seen that organisms are dependent on one another and green plants are the primary producers. Now the second role of biodiversity is consumption. Herbivores consume plants and carnivores consume animals for food. And this process of consumption is helpful in running of food chain and maintenance of ecological balance. Children, how the ecological balance is maintained? There is a dependence between the organisms and they have a proper number. If you are going to reduce the number of any one of the consumer or the producers, then what will happen? The balance will be disturbed. Say that we are removing the producers, the green plants, then what will happen? Herbivores will die because producers are not there. And because herbivores will die, then carnivores will also die because they will not get the herbivores. So this is how the balance is disturbed. Ecological balance is disturbed.
So we have to maintain the ecological balance also. Then the third role of biodiversity is decomposition. Microorganisms help in the decomposition of dead plants and animals, and they return the nutrients back to the soil. You can see this picture. In this picture, this is showing the decomposition of an apple. So this is happening because of the microorganisms, and the nutrients is getting mixed up in the soil. Now the next role is soil formation. After the decomposition of dead plants and animals, a substance called as humus is formed. That humus is made from dead plants and animals, and it contains nitrogen and other substance. So the roots of trees and plants help in the soil formation. These roots hold the soil. They hold the soil, and that's why soil erosion can also be prevented with the help of that. So humus is a substance which enhances the nutrients, which enriches the soil. Now the next one is control of erosion. So plants, with the help of their roots, fix the soil and they control soil erosion. Then the next role is reduction of pollution. Children, plants purify air by converting carbon dioxide into oxygen, and this occurs during the process of photosynthesis. Now there are various microbes which help in degrading the pollutants. Let me give you an example of oil spills. When there is an oil spill, few microorganisms are there which degrade these oils in the water bodies. So microbes are also helpful in degrading the pollutants. Children, here are few purifying house plants. You can see it here. Then moving on to the next role is nitrogen fixation. Nitrogen fixation is the conversion of nitrogen into ions, which can be easily taken up by the plants and which increases the fertility of the soil. Here is a cycle showing nitrogen fixation. We can see that there are various sources of atmospheric nitrogen, and then we can see that various decomposers and bacteria are involved here, which convert the atmospheric nitrogen into nitrite ions or ammonium ions, and all these things are mentioned here. Now let's see the second importance of biodiversity, the second reason for concern. This is aesthetic importance. Children, whenever you come across the word aesthetic, it means that it is related to beauty. It is related to beauty. So each species and ecosystem adds to the richness and beauty of life on earth. And beauty is important in life because it is representative of our values, which further add our actions through life. Now aesthetic value of biodiversity means different fauna and flora which is found on the earth and enhance the beauty. Now examples are biodiversity hotspots. Biodiversity rich areas attract the tourists from all over the world because millions of people enjoy wildlife photography, camping, bird watching, and other recreational activities based on nature. Now let me tell you what is recreation. What is recreational activities? Children, the activities which are performed for amusement, for pleasure, all these activities comes under recreational activities like river rafting and trekking and all. So all these activities comes under recreational activities. So we visit these areas, national parks, wildlife sanctuaries, for all these recreational activities and wildlife photography also. So this is the aesthetic importance of biodiversity. And one more very important thing, that the aesthetic importance of the aesthetic value of biodiversity is also responsible for generating the employment, because people visit there. So many of the officers and people are appointed at in those areas to watch the activities of the people, to prohibit them to not to do the illegal activities and all. Okay, so it will generate the employment also, and because we visit there, it generates the revenue also because we are paying and all. So all these are the pictures of the biodiversity hotspots, biodiversity areas. Now what are biodiversity hotspots? Biodiversity hotspots means the areas which has rich biodiversity. Now what aesthetic value? Great aesthetic value is attached to biodiversity, because stretches of barren land with no signs of visible life is not a pleasant sight for us.
Ecotourism is based on the aesthetic value of biodiversity, and it is estimated to generate about $12 billion of revenue annually. Now the next one is economical importance of biodiversity. Children, the first thing which we obtain from biodiversity is food. Food is an important commodity produced by biodiversity. Both animals and plant products are utilized as food by human beings. Here are the food you can see we obtain from the biodiversity. Many more are there. Medicines. Various plants and animals are the source of medicines. Penicillin, which is the first antibiotic, is derived from a fungus called as Penicillium notatum. Various other medicines are also developed or obtained from biodiversity. This is the picture of Penicillium notatum. Now moving on, industry. Biodiversity provides raw materials for industries like paper industry, cotton industry, rubber industry, timber, etc. This is a cotton plant you can see, and here is a plant showing that how we obtain the natural rubber from the plant. Then the next thing is tourism and recreation. Biodiversity rich spots are major tourist and recreation center which generates revenue and employment. I have explained this to you. You can see these activities people perform. All these are recreational activities. Then marine products. India has a rich marine biodiversity. Marine products have a great value in terms of food, medicines and minerals. Children, people are dependent on seafood at the areas where if they live around the sea and all. Along with that, we obtain cod liver oil, which is a source of various nutrients. So these marine products are have a great value in terms of food, medicine and minerals. Now student, let's revise what I have explained you here in this video. I'm going to start with the reasons for concern. मैंने आपको बताया कि reasons for concern क्या है, क्या biodiversity की importance है. आपके एग्जाम में, बोर्ड के या होम एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछा जा सकता है. क्या रीजंस हैं? इकोलॉजिकल रीजंस हैं, एस्थेटिक रीजंस हैं और इकोनॉमिकल रीजंस हैं. पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल रीजन से. इसके लिए मैंने आपको बताया इकोलॉजी क्या होती है. इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन पढ़ते हैं, उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी और आपस में भी. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं और नॉर्मल लाइफ के लिए भी उनको एयर की ज़रूरत है, रेस्पायर करते हैं. सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो सॉइल पर डिपेंडेंट है, एयर पर डिपेंडेंट है. फोटोसिंथेसिस के लिए भी उनको वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. तो ये क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंसी. इसके साथ साथ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है. तो ये क्या है? डिपेंडेंसी है, एक इंटरैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी. सो दिस इज़ हाउ द इकोलॉजी और इकोसिस्टम वर्क्स. सो यहाँ पर हम जो बायोडाइवर्सिटी का रोल पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला रोल जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रोडक्शन. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के अर्थ पर और वो फूड चेन को इनिशिएट करते हैं. एक फूड चेन का मतलब होता है एक इंटरडिपेंडेंस ऑर्गेनिज्म का हम पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा हर फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर्स से ही स्टार्ट होती है. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं. ग्रास हॉपर ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट है, फ्रॉग ग्रास हॉपर पर डिपेंडेंट है, स्नेक फ्रॉग पर डिपेंडेंट है और हॉक स्नेक पर डिपेंडेंट है. हॉक की जब डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजर्स उसकी बॉडी को डिग्रेड करेंगे. सो ये एक तरह से फूड चेन मैंने आपको बताई कि एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंसी है. अब बात करते हैं कंजम्पशन की. हर्बीवोर्स प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और कार्निवोर्स एनिमल्स कंज्यूम करते हैं फूड के लिए. और ये जो प्रोसेस होता है कंजम्पशन का, ये फूड चेन को रन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है. अगर हम इसमें से कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल यानी कि हर्बीवोर या कार्निवोर को इस तरह से हटा दें तो पूरा का पूरा ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम प्रोड्यूसर्स को हटा दें तो हर्बीवोर्स की डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको प्रोड्यूसर्स नहीं मिलेंगे, और अगर हर्बीवोर्स की डेथ हो गई तो कार्निवोर्स की डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको हर्बीवोर्स नहीं मिलेंगे खाने के लिए. तो ये हो गया एक बैलेंस. अब डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं.
डिकम्पोज का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके वो ईजिली सॉइल में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। अब बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन की। डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। उसमें नाइट्रोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल को और रिच करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट उसका बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ इरोजन की। क्योंकि प्लांट के रूट्स सॉइल को होल्ड करते हैं तो उस सॉइल को फिक्स करते हैं, तो इस वजह से वो सॉइल इरोजन को रोकने में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूशन को कम करने की। ग्रीन प्लांट्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। एक बात और, रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड भी करते हैं। यहाँ पर कुछ हाउस प्लांट्स दिए हुए हैं जो एयर को प्योरीफाई करते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो एक बार इसको बस थोड़ा सा समराइज़ करेंगे यहाँ पर कि माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे कि राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब है उसको ऐसे आयंस में चेंज करते हैं जो सॉइल में ईजिली मिक्सड अप हो जाते हैं और प्लांट्स उसे ईजिली ले सकते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारे हो गए इकोलॉजिकल रीजंस। अब बात करते हैं एस्थेटिक की। एस्थेटिक वर्ड अगर कहीं पर भी आता है इसका मतलब है वो ब्यूटी से रिलेटेड है। तो जो भी स्पीशीज़ और इकोसिस्टम होता है वो एक रिचनेस और एक ब्यूटी बढ़ाता है लाइफ की अर्थ पर। ब्यूटी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी वैल्यूज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और हमारे एक्शंस के थ्रू वो और एनहांस हो जाता है। हालांकि हमारे एक्शंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो यहाँ पर समथिंग विच इज़ सूदिंग टू द आईज वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एस्थेटिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट फौना और फ्लोरा अर्थ में प्रेजेंट हैं जो उसकी ब्यूटी को और एनहांस कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और विज़िट करते हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, कैंपिंग करते हैं, बर्ड वॉचिंग टाइम होता है कि वो उस समय वो बर्ड्स आएंगी उनको व्यू करते हैं, और दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो अम्यूज़मेंट के लिए की जाएँ या क्या कहते हैं जो प्लेजर के लिए किए जाए। जैसे बहुत लोग रिवर राफ्टिंग पसंद करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो अब एस्थेटिक वैल्यू मैंने आपको बताया कि इससे इको टूरिज़्म जो है वो एस्थेटिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर ही बेस्ड है। उसके साथ साथ करीबन $12 बिलियन जो है वो एनुअली जनरेट होता है रेवेन्यू इको टूरिज़्म से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और मतलब इस तरह के एरियाज़ विजिट करते हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ तो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लिमिटेड होती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी पीपल अपॉइंटेड होंगे ये देखने के लिए कि हम कौन सी एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और भी दूसरी चीज़ें हैं। हम वहाँ पर पे करेंगे, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। इसके साथ जो लोग वहाँ अपॉइंट होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इस तरह से एस्थेटिक वैल्यू हो गई या एस्थेटिक इंपॉर्टेंस हो गई। अब लास्ट बात करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले हमें फूड मिलता है जो एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं फूड के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा। उसके बाद मेडिसिन्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल से बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है पेनिसिलिन का, जो एक एंटीबायोटिक है जो एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन होती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। बायोडाइवर्सिटी से हमें वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई बहुत सारी, जैसे पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन इंडस्ट्री के लिए हो गया, रबर इंडस्ट्री के लिए होगा, टिम्बर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉटन प्लांट और एक प्लांट जिससे हम रबर ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचुरल रबर। अब बात करते हैं टूरिज्म और रिक्रिएशन की। बायोडाइवर्सिटी रिच स्पॉट्स जो होते हैं वो मेजर टूरिस्ट और रिक्रिएशन सेंटर होते हैं जिससे रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मरीन प्रोडक्ट्स।
इंडिया की एक रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी है और मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो फूड, मेडिसिन और मिनरल्स तीनों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, कॉड लिवर ऑयल का, जो फ़िश से ऑब्टेन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, और इसको डॉक्टर्स भी एडवाइज़ करते हैं लोगों को लेने के लिए। सो दिस वाज अबाउट द रीजंस फॉर कंसर्न और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।